Okay. So that was question number 3A part. Y is equal to 1 upon x square. X square will go upside. It will become x to the power minus 2. Now we will differentiate dy upon dx will be equal to minus 2 will come over there. X to the power minus 2 minus 1. So minus 2x to the power minus 3. This is the answer. This is the differentiation derivative. But it is said, write your answer in positive indexes. Write your answer in positive index. So x to the power minus 3 will come down so that it will become positive index. Minus 2 remain as it is because its power is 1. Its index is 1. So it will remain, it is positive 1. When there is no index, it means the index is positive 1. So it will remain as it is, and x to the power minus 3, it has negative index. It will come down so that it will become positive index. So answer is minus 2 upon x to the power 3, positive index. Question number C part of the same question. C part. Y is equal to 10 plus 5x plus 1 over x square. We will be able to differentiate this one. We will be able to differentiate this one, but this cannot be unless it will go upside. इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये नहीं होगा जब तक कि ये ऊपर नहीं चला जाएगा. So first of all, we'll shift it upside. Safwan bin Jawad. Okay. Then Bilal Sheikh. Okay. So we will rewrite it. डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, पहले सबको एक एक्स स्क्वायर 1 एज इट इज रहेगा. एक्स टू पावर 2 विल गो अपसाइड. इट विल बिकम एक्स टू पावर माइनस 2. अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे. अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे. ये दूसरा सजला सर. Now we will differentiate it. dy upon dx, because y is a function of x. dy upon dx. The derivative of the constant 10 is constant. It is not associated with x. So derivative of 10 will become 0. 5. Derivative of x will be 1. कैसे 1 होगा? इसकी पावर 1 है. ये constant as it is रहा. x is to power 1 है. It will come over there 1 into x is to power 1 minus 1. एक कम कर देंगे. जो भी पावर है that will come over there and x1 minus plus इसकी minus 2 x is to power minus 2 minus 1. It will become 0. खत्म हो जाएगा. 5 into x is to power 1 minus 1. 5 into x is to power 0. ये क्या होगा? x is to power 0. 5 as it is रहा. ये 1 into x is to power 1 minus 1 will be 0. और ये plus minus minus 2 x is to power minus 3.
and x raised to power 0 will become 1. X raised to power 0 will become 1. So x का derivative, that was the derivative of x. So derivative of x will be 1. Derivative of x will be 1. It is 1. The derivative of x 1 आ गया भाई, याद रखें ना, derivative of x will be 1. और ये -2, इसको नीचे ले जाएंगे, नेगेटिव पावर है, x raised to power 3 हो जाएगा. और 5 into 1 will be 1. 5 into 1 will be 5 minus 2 upon x cube. This is the answer. Saad Ahmed. Okay. तो ये हमारे पास आंसर आ गया 5 minus 2 upon x raised to power 3. 5 minus 2 upon x raised to power 3. This is the answer. Next question. Next part of the same. Now we'll do the A part. इसमें सब ऐसे ही है. D part 10 plus 5 upon x square plus 1 upon x square. तो ये 5 upon x square 1 upon x square ये कंबाइन हो जाएंगे. सब okay. First D part. D part, y is equal to 10 5 upon x square plus 1 upon x square. ये मुमकिन है इसमें से कोई गलत हो, लेकिन ये एक्स स्क्वायर ना हो, लेकिन हमारे पास चूंकि एक्स स्क्वायर है हम इसको इसी तरह करेंगे. तो y will become 10 और 5 upon x square 1 upon x square will become 6 upon x square. Both have the same denominator, therefore their numerator will be added. सेम डिनोमिनेटर हो तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे. जैसे 1/2 प्लस 1/2 है तो 1 हो जाएगा. 1 + 1 2/2 दैट इज 1. यानी अगर हमारे पास एक 3/4 है और एक 1/4 है, सपोज 3/4 and 1/4 both have the same denominator, so 3 + 1 will be 4, 4/4, 1. तो आंसर will be 1. तो 3/4 और 1/4 को ऐड करें तो आंसर 1 आ जाएगा. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर विल बी एडेड. सेम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो फिर एलसीएम लेकर हम करते हैं और वी विल कन्वर्ट इनटू द सेम डिनोमिनेटर्स. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करके फिर उसको ऐड करते हैं. So they have the same. So 5 + 1 will be 6 upon x square. Now we will differentiate. ये तो हमने सिंप्लीफाई किया. अब डिफरेंशिएट क्या, y पहले x स्क्वायर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, it will go upside. So y will become 10 + 6 x raised to power -2. Now we can differentiate it. Otherwise we are not. So it will become dy upon dx. Y is a function of x. Dy upon dx. The derivative of 10 will be 0. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. +6 into derivative of x raised to power -2. It will become -2 x raised to power -2 -1. ये हो जाएगा 6 into -2 -12 हो जाएगा और x raised to power -3 -12 x raised to power -3. तो -3 नीचे से चला जाएगा, -12 अपॉन x raised to power 3 हो जाएगा. 12 पॉजिटिव इंडेक्स है,
12 के ऊपर पावर 1 है, ये ऊपर ही रहेगा, जिसके नेगेटिव पावर है ये नीचे आ जाएगा। सो -12 x raised to power -3 will become -12 upon x raised to power 3. -3 power will become +3. So our यहाँ ये भी सही है, this is the differentiation is correct. लेकिन चूंकि उसने कहा पॉजिटिव इंडेक्स में, ये सिर्फ हमने पॉजिटिव इंडेक्स में कन्वर्ट किया, डिफरेंशिएशन यहीं तक है, डिफरेंशिएशन इज अप टू हियर। लेकिन चूंकि उसने कहा सिंप्लीफाई करना है यानी पॉजिटिव इंडेक्स में करना है, तो हमने उसको नीचे ले लिया। सो -12 x raised to power 3 हो। दैट वाज डी पार्ट। नाउ द ई, p is equal to q raised to power 3 upon 3 plus 70q minus 15q square. p is a function of q. E part, p is equal to q cube upon 3 plus 70q minus 15q square. एक चीज याद रखें भाई, अगर लेटर कैपिटल है तो आपको भी कैपिटल में ही लिखना है, अगर लेटर स्मॉल है तो यू हैव टू राइट इन स्मॉल लेटर्स। If they are the capital letters, you have to write in the capital letters. If they are the small letters, you have to write in the small letters. और d upon dx वो हमेशा small होता है, derivative d will be small. Now we'll find, ये सब ऊपर पावर है, नीचे कोई भी नहीं है फंक्शन, तो इसको एज इट इज करते हैं। dp upon dq, ये d और ये d स्मॉल रहेगा, this d and this d will always be small, but the letters, the functions, if they are capital, you will write in capital. If they are small, you will write in small. Will be equal to, ये 1/3 into q cube है, तो 1/3 अलग लिख देंगे, this is the constant. And the derivative of q raised to power 3 will be 3 into q raised to power 2 आ जाएगा, एक पावर कम करके, plus 70. The derivative of q will be 1. Minus 15 into derivative of q square will be 2 q raised to power 1, एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ भी एक पावर कम हो जाएगी, पावर 0 हो जाएगी, तो 0 मीन्स 1, q raised to power 0 मीन्स 1. ओके, तल्हा खान के now it 3 is cancelled by 3, it will become q raised to power 2 plus 70 minus 30q. This is the answer. Now we will write in order, in descending order, so it will become q square, then minus 30q plus 7. डिफरेंशिएशन तो यहीं तक है, ये सिर्फ हमने ऑर्डर में लिखा है। That was dp upon dq, derivative of p with respect to q, derivative of p with respect to q. अब फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर 4, here
Differentiate each of the following, giving your answer with positive indices only. इसमें पॉजिटिव इंडाइसेस में आंसर देना है. अच्छा, यहाँ पावर जो है वो रैशनल पावर. इन दिस क्वेश्चन पावर्स आर रैशनल. तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 अंडर रूट क्यूब. क्वेश्चन नंबर 4, 5 अंडर रूट क्यूब. Y is equal to 5 under root x. 4a part. Five under root x. Under root x means x is to power 1 over 2. हम इसके रूट को जो हटा के, रेडिकल साइन को हटा के हम इसको रैशनल पावर में ले आए. अंडर रूट का मतलब पावर 1 over 2. Under root x means x raised to power 1 over 2, and 5 is remain as it is. Now we will find the derivative of y with respect to x. dy upon dx will become, 5 is constant, it will remain as it is, and we have to find that we will multiply with the derivative of x raised to power 1 over 2. It will become 1 over 2, x raised to power 1 over 2 minus 1. 1 over 2, x raised to power 1 over 2. ये जो भी पावर होगी, it will multiply with this one. And x raised to power 1 over 2 minus 1. 1 power minus कर देते. It will become 5 into 1 over 2 will be 5 over 2. And x raised to power 1 over 2 minus 1. It will become minus 1 over 2. 1 over 2 minus 1. LCM will be 2. 2 1s are 2. So 1 आ जाएगा. Minus 2 1s are 2. 1 minus 2 over 2. So 1 minus 2 will be minus 1 upon 2. तो ये पावर वाह, यानी हाफ माइनस कर दें, 1 में से हाफ प्लस है और 1 माइनस है, तो माइनस का हाफ बच जाएगा. माइनस का हाफ बच जाएगा. सो इट विल बिकम 5 over 2 x raised to power minus 1 over 2. इसको पॉजिटिव इंडेक्स में लाने के लिए नीचे ले जाएंगे. 5 ऊपर है, 2 नीचे है, तो 2 के साथ ये भी नीचे आ जाएगा. 5 upon 2, ये नेगेटिव पावर है, नीचे आ जाएगा x raised to power 1 over 2. x raised to power 1 over 2 can be written under root x as it is. इसको अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं या एज इट इज रहने दें. यूं भी लिखा जा सकता है, जो भी इसको लिखा जा सकता है. 5 upon 2 अंडर रूट एक्स. पावर 1 over 2 को अंडर रूट एक्स भी लिखा जा सकता है. दिस इज dy upon dx. द सेम. ये सॉल्व यहीं तक हो गया. डिफरेंशिएशन तो इसका यहाँ हो गया, लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको पॉजिटिव इंडेक्स में कन्वर्ट किया, और पॉजिटिव इंडेक्स से फिर हमने इसको रूट में कन्वर्ट कर दिया. तो क्वेश्चन असल में यहाँ तक ही हो गया. डिफरेंशिएशन तो यहाँ तक हो गया. द रिमेनिंग पार्ट इज द सिंप्लीफिकेशन. रिमेनिंग पार्ट इज द सिंप्लीफिकेशन. मरियम दो. Zanbeg. Anyone may convey the message to Zanbeg. He must write the ID. He didn't write the ID. Convey the message to Zanbeg. He must write the ID. I am checking in the group whether he sent the message over there.
So anyone may send the message to Zen Big. He or he must write the ID. So that was the A part. Question number 4, y is equal to 5 under root x. So under root x will be converted into x is to power 1 over 2. So we'll now after that we will take the derivative. Dy upon dx will become 5 as it is. Derivative of x is to power 1 over 2 will be 1 over 2. X is to power 1 over 2 minus 1. So 5 into 1 over 2 will be 5 over 2. X is to power 1 over 2 minus 1 will be minus 1 over 2. अब माइनस 1 over 2 को पॉजिटिव इंडेक्स में लाना है तो नीचे ले जाएंगे 5 over 2 under root x is to power 1 over 2. Now if you want to convert into the radical sign, so 5 over 2 under root x. X is to power 1 over 2 will become under root x. So this is the answer. Now the C part. C part, y is equal to 1 over root cube. Y is equal to 1 over root cube. जी बेटा कहिए. Yes. So this thing 1 upon 2 minus 1 is a separate topic, or it is a part of the question? This is the derivative. I told you there are formulae. We have to subtract one power from the given power. Yeah, but just in the right hand side, ये जो हमने right पे के What over 1 over 2 minus 1 will be minus 1 over 2. ये नहीं सर, ये right वाला इसके side वाला right पर. This one 1 upon 2 minus जी. ये तो बेटा मैंने इसको solve किया है ना. That I showed 1 over 2 minus 1. How it will become minus 1 over 2. Okay. That is the rough work. Alright. Thank you. Okay, next the C part. Y is equal to 1 over under root cube. Radical sign will be converted into the power, rational power, 1 over q raised to power 1 over. Now this denominator will go upside so that we can differentiate it. Y is equal to q raised to power minus 1 over 2. Now we can differentiate it. ये सिर्फ हमने इसको simplify किया है. We just simplified it. First the radical sign is converted into the rational power. Then this is because it is a denominator. So we have to shift upside so that it will become the numerator. Now we will differentiate y is a function of q. So dy upon dq is equal to minus 1 over 2. This power will come over there into q raised to power minus 1 over 2 minus 1. It will become minus 1 over 2 minus 1. So it will become minus 1 over 2 q raised to power minus 1 over 2 minus 1 will become minus 3 over 2. Minus 1 over 2 minus 1 will become minus 3 over 2. Both are negative, so both will be added. So it will become 1 over half and 1 will be 1 and half, that is 3 upon 2. So negative power will come down, minus 1 as it is. ये negative power को नीचे ले जाएंगे 2q raised to power 3 over 2 positive. It will become positive index. 1 over 1 as it is रहेगा ऊपर, 2 नीचे है, उसके साथ ये पावर चली जाएगी. That will come down 2q raised to power 3 over 2. Sayyid Abdul Wahid. Yeah, how come 3 came? So 1 upon 2 है minus 1. Yes. Sayyid Abdul Wahid. Minus 1 over 2 minus 1. LCM is 2. It will become minus 1 minus 2. So minus 1 and minus 2 will be minus 3 upon 2. Minus 1 over 2 minus 1 will become minus 3 over 2. Okay. So this is the answer.
First of all, under root will be converted into the rational power q raised to power 1 over 2. Now it is the denominator, it will go upside so that it will become the numerator. It becomes the numerator q raised to power minus 1 over 2. Now we will differentiate. सबसे पहले हमने रूट को यानी रेडिकल को हमने रैशनल पावर में कन्वर्ट किया, उसके बाद अगर वो डिनोमिनेटर में है तो उसको आप अपसाइड पर ले गए, न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दिया, फिर उस डिफरेंशिएट करेंगे. नाउ डिफरेंशिएट dy अपॉन dq विल बिकम -1 over 2 q raised to power -1 over 2 minus 1 -1 over 2 q raised to power -3 over 2. This is the negative power. So how to convert it into the positive index? It will come down 1 over 2 q raised to power 3 over 2. This is the answer. dy upon dq. Derivative of y with respect to a q. Derivative of y with respect to q. Now another question we will do. Question F part. 1 over 3 cube root of q. Y is equal to F part. Y is equal to 1 over 3 cube root of q. If small number is over there with the radical sign, it means this is 1 over 3 power. If it is power 4 is written, power 1 over 4, etc. So this is the third root. This is the third root. So it can be written y is equal to 1 over 3 q raised to power 1 over 3. ये 3 लिखा है तो 1 over 3. अगर यहाँ n होता q और यहाँ small n लिखा होता, that is the nth root. It means the nth root of q. It will be written q raised to power 1 over n. Rational power में इस तरह आ जाता है, root में इस तरह लिखा होता है. That is the nth root. So 1 over n. This is 3 written, so 1 over 3. It will become 1 over 3. तो ये हमारे पास पावर आ गए. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. Now we will differentiate it. dy upon dx, dy upon dq 1 over 3 as it is आया कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव q raised to power 1 over 3. So 1 over 3 यहाँ आ जाएगा into q raised to power 1 over 3 minus 1. Now 1 over 3 into 1 over 3, 1 into 1 will be 1, 3 into 3 will be 9. And q raised to power 1 over 3 minus 1 will be minus 2 over 3. 1 over 3 minus 1 will be minus 2 over 3. और ये नेगेटिव पावर नीचे चली जाएगी. 1 over 9 ऑलरेडी है, ये भी नीचे चले जाएगा. q raised to power 2 over 3. It will become q raised to power 2 over 3. So the answer is dy upon dq is equal to 1 over 9 q raised to power 2 over 3. 1 over 9 q raised to power 2 over 3. Now another question, G part. G and H both we will do. G, P is equal to 5Q plus 2 upon 5. P is equal to 5Q, G part. Uh, 5Q plus 2 upon 5. We will separate them. P will become 5Q upon 5
+2/5 सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। ये डिनोमिनेटर इसके नीचे भी लिखा जाएगा, इसके नीचे भी लिखा जाएगा। This denominator will come under this one as well as under this one. 5 is cancelled by 5. So P will become Q +2/5. Now differentiate it. dP/dQ. ये डेरिवेटिव वाला d और ये कैप with respect to वाला d, that must be the small letters. D must be small. This d and this d must be small. ये भी मैंने small लिखे हैं यहाँ भी. They must be small, never capital. लेकिन यहाँ ये जो वेरिएबल होंगे, ये फंक्शन ये कैपिटल है तो कैपिटल में लिखना है, स्मॉल होंगे तो स्मॉल में लिखना है. इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ q will be 1. As I told you, the derivative of x was 1. क्योंकि 1 नीचे आ जाएगा और पावर 1 - 1 करेंगे तो पावर 0 हो जाएगी. q raised to power 0 will be equal to 1. और प्लस दिस इज कांस्टेंट 2/5, the constant, the answer is 0. The derivative of the constant will be 0. So the dP/dQ answer is 1. 1 plus 0 will be 1. इसका आंसर 1 आ गया. तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई किया, 5q/5 सेपरेट किया, +2/5 सेपरेट किया. This 5 is cancelled by 5. This is only q. So P is equal to q +2/5. अब इसमें हमने डिफरेंशिएट किया तो इसमें अप्लाई कर दिया फार्मूला. द डेरिवेटिव ऑफ dP/dQ will be derivative of q will be 1 and 2 derivative of constant will be 0. 2/5 is a constant number. ये अंडर रूट में भी होता तो भी वो कांस्टेंट ही होता. तो अंडर रूट का भी कोई नंबर अगर अंडर रूट में है तो उसका भी डेरिवेटिव 0 होगा. सो दिस इज 0. तो 1 इज द आंसर. इसके बाद हमारे पास GH पार्ट है, वो BC टाइप का है, उसको भी सेपरेट करना है. For the constant is always 0, right? जी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा. GH P is equal to 5q + 2 अपॉन q. अब यहाँ अपॉन q है, इसको भी हम सेपरेट करेंगे. P will become 5q/q +2/q. q is cancelled by q. P will become 5 +2/q. ये q एज अ डिनोमिनेटर है, इसको हम अप साइड पे ले जाएंगे, न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देंगे. पावर 1 है इसकी, ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा. अगर फंक्शन नीचे होगा तो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इट मस्ट गो अप. दिस इज 5 + 2 q raised to power -1 आ जाएगा. ये q raised to power 1 है, ये ऊपर जाएगा, q raised to power -1 हो जाएगा. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो dP/dQ, it will become, the derivative of 5 will become 0. The derivative of 5 will become 0 plus 2. The derivative of q raised to power -1 will become -1 आ जाएगा नीचे, and q raised to power -1 में से एक माइनस कर देंगे. Subtract -1 from the given formula. So 0 will remain 0, it खत्म हो जाएगा. 2 into -1 will be -2 and q raised to power -2. This is the derivative, -2 q raised to power -2. Now we have to convert into the positive index. So it will become -2 ऊपर रहेगा upon q -2 will come down, q raised to power 2. This is the answer. dP/dQ will become -2 upon q raised to power 2. Talha Khan and R.S. Sohail Somro.